संसद के भीतर ई सिगरेट पीने का मुद्दा, लोकसभा स्पीकर को इस बाबत शिकायत दी गई है, लिखित शिकायत। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, उन्होंने इस मामले में लिखित शिकायत दे दी है। टीएमसी के एक सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे थे, जांच हो और कड़ी कार्रवाई की जाए, ये अनुराग ठाकुर ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है। कल मौखिक तौर पर यह मुद्दा अनुराग ठाकुर की तरफ से सदन में उठाया गया था और तब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से कहा गया था कि लिखित में शिकायत दीजिए, इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो अब आज लिखित में वो शिकायत दे दी गई है, लेकिन आज भी ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें सिर्फ टीएमसी सांसद ही लिखा गया है। अब वो कौन टीएमसी सांसद, इसका नाम का जिक्र चिट्ठी में नहीं किया गया है। तो लोकसभा स्पीकर को लिखित शिकायत अनुराग ठाकुर ने दी। संसद में ई सिगरेट पीने से जुड़ा ये मामला। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर, नहीं सर आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। और सीधे लेकर चलेंगे अब आपको लोकसभा। राहुल गांधी लोकसभा को संबोधित कर रहे हैं। That we can also plan and work together to solve something that is critical. I think the government should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament, and we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement and the best minds are going to be put into place to solve this issue. Thank you. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Thank you, Speaker. श्री किरण रिजिजू जी। पर लोकसभा में अपनी बात रखी है वायु प्रदूषण पर। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है। किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। Form of suggestion. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue and some other parties, and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solution, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. So the matter was placed in the Business Advisory Committee as we had discussed about the election reforms, including the special intensive revision. Under the various laws, various rules, we will see how we will take up this discussion. But we will, please, the matter was brought in the BSC, so if let us he is responding take this back to BSC. during 0 hour, you can understand. Government is ready to discuss. No, you can understand. Just wait. Government is always prepared to have discussion under any rule, but only what the point I want to make is, since the matter was brought in the BSC, we will come back and let us see how we can structure the discussion into, and then we are ready to take up this matter. धन्यवाद। I think a good idea would be that we frame the discussion not on us saying what you have not done and not on you saying what we have not done, but simply saying that what are we going to do for the people in India in the future, what are the action steps that we need to take. So I would say that it would be an interesting experiment to see if instead of you blaming us and we blaming you, we can try and say on this one issue where we agree, there's no disagreement, there we say, listen, let us just talk about the future of the people. It is not a question of any blame game. I think so. Minister, Parliamentary Affairs Minister, you also responsible. Kindly, anybody wants to bring
So in any form of the resolution and in BSc will take decision under the leadership of Honorable Speaker.